द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो आम देखा एमसीक्यू प्रश्न गुड़िक माराथन एमसीक्यू। प्रथम प्रश्न, खुशवंत सिंह इज ए डैश राइटर। खुशवंत सिंह इज ए इंडियन राइटर। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज ए डैश ऑफ द राइटर। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज एन कौन ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ द राइटर। नेक्स्ट प्रश्न, द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर वॉज डैश। द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर वॉज ओल्ड। ओके, बुढ़ी जाइए। द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर वॉज वंस डैश। थरे कौन थिले से यंग एंड प्रेटी थिले। व्हाट डज प्रेटी मीन्स? प्रेटी माने कौन? प्रेटी माने होची कौन? ओके, प्रेटी माने अट्रैक्टिव विदाउट बीइंग वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट प्रश्न, पोर्ट्रेट मीन्स व्हाट? पोर्ट्रेट माने कौन ना? पोर्ट्रेट होची गोटे पेंटिंग, ड्राइंग और ए फोटोग्राफ को पोर्ट्रेट कहती। तापर देख, मेंटल पीस मीन्स व्हाट? मेंटल पीस माने कौन? मेंटल पीस माने ए सेल्फ। ओके, ए सेल्फ माने थाको। द पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंडफादर वाज हंग इन द डैश। केउंटी झुला हितला ना? ड्राइंग रूम रे झुला हितला। नेक्स्ट प्रश्न, द ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर ओर ए डैश बिग डैश। ओके, ओर ए बिग डैश एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। कौन पिंधि थिले? ओर ए बिग टर्बन। ओके, द ग्रैंडफादर हैड लॉन्ग व्हाइट डैश, लॉन्ग व्हाइट बियर्ड। बियर्ड माने दाढ़ी। द व्हाइट बियर्ड ऑफ द ग्रैंडफादर कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज डैश। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। ओके, चेस्ट पर्यंत चली आसला दाढ़ीटी नहीं कि। द ग्रैंडफादर लुक्ड डैश इयर्स ओल्ड। लुक्ड 100 years old। देखा जाउतले जंती 100 वर्षर। द ग्रैंडफादर लुक्ड एज इफ ही हैड लॉट्स ऑफ डैश, लॉट्स ऑफ ग्रैंडचिल्ड्रन। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच थॉट वाज रिवोल्टिंग इन राइटर्स माइंड। केउं चिंताटी रिवोल्टिंग विद्रोह कर दूतला तांको मन को सदा बेले ना? ग्रैंड मदर वाज वंस यंग एंड प्रेटी, एई कथाटी। नेक्स्ट प्रश्न, द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर often told about dash she used to play। The grandmother of the writer often told about games। games कौन खेलुतले छोटे बेले सेटा कहि दउतले। that seemed quite absurd। what does the underline word means? underline words माने कौन? absurd। absurd माने कौन? absurd माने not logical and sensible। ओके, लॉजिकल नो, तर्क थ्रोरे नुह। ओके, लॉजिकल नहीं कि सेंसिबल नुह। नेक्स्ट प्रश्न, अनडिग्निफाइड मीन्स व्हाट? अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड माने नॉट रेस्पेक्टेबल। ओके, व्हाट डज फेबल मीन्स? फेबल माने कौन? ए मोरल स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर्स। फेबल माने गोटे मोरल स्टोरी, नैतिक गल्प जोटा कि एनिमल कैरेक्टर थिवो। द ग्रैंडमदर वाज डैश एंड स्लाइटली बेंट। The grandmother was short and fat, slightly bent. Her face had dash wrinkles. Her face had crisscross wrinkle. Okay, crisscross. Next question. She hobbled about the house. What does the underline word means? Hobbled mane kaun? Hobbled mane walk in an awkward way. Okay. walk चलिबा in an different way, awkward way। next प्रश्न, she hobbled about the house in spotless white। तो what does the underline words mean? spotless white माने कौन? spotless white माने clean cloth रे, clean cloth रे माने spotless white रे से घर रो एपट सेपट होतले। where does grandmother's one hand rest? गोटे हाथ ग्रैंड मदर कौट थिला। ओके, गोटे हाथ रेस्ट करथला वेस्ट रे, तांको अंटारे नहीं कि। द अदर हैंड ऑफ द ग्रैंड मदर टेल्स द डैश। अदर हैंड ऑफ द ग्रैंड मदर से कौन? टेल्स माने कौन? कौन गणुथिले ना? माला गणुथिले। ओके, माला गड़ौथिले होची बीड्स, माला रे थिले तांकर आ गोटे हाथ। द ग्रैंड मदर हैड silver dash। the grandmother had silver locks। okay, silver locks। her silver locks were scattered untidily
over her pale puckered face. What does the underline word means? Puckered mane kon? Puckered mane kon? Okay. Her silver locks were scattered untidily. Okay. Nahi. Over her pale mane kon? Fika. Okay. Fika, pale, and puckered face mane wrinkled face. Wrinkled face mane? Okay. Wrinkled, crisscross. माने चम धुड़की जाइथिबा. Her lips constantly moved in lips तांकर ओठ सब बेले constantly कौन चल थाए ना inaudible prayer जोटा कि सुना जाए नहीं prayer टा बा प्रार्थना टा. She was like the winter landscape भलिया से in the mountain. Okay, mountain ने जेमते winter landscape थाए सेमते धोबो फर. What does the underline phrase means? Winter landscape माने कौन? विंटर लैंडस्केप माने होची वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस. से बहुत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक थिले धार्मिक थिले. हु वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. से होची ग्रैंड मदर इज लाइक. ओके, मदर ऑफ द राइटर ग्रैंड मदर. ओके, नेक्स्ट ग्रैंड मदर वाज एन एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट डैश. एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी. ओके, serenity. Who was breathing peace and contentment? Okay, the grandmother was breathing peace and contentment. से सब बेले शांति रे एवं खुशी रे थिले कि grandmother. Who were good friends? को माने good friends थिले. उत्तर होचे writer and grandmother. Sorry, grandfather no, एटा B होगा आंसर. Writer and grandmother. Next प्रश्न. The parents of the writer left him with dash when they went to live in the city. The parents of the writer left him with dash with grandmother. Okay. Who was waking the writer up in the morning? सखाळु के उठाउतले राइटर को से होचंती भी grandmother. The grandmother was getting the writer ready for dash, ready for school. Next, she said her dash in a monotonous sing-song way. She said her morning prayer, okay, in a monotonous sing-song way. Who bathed and dressed the writer? Writer को किए गाधे दउथले एवं writer को dress up भी कर दउथले किए grandmother. Next प्रश्न. The writer was writing on dash slate in childhood. को slate रे लिखुतले से होचे wooden slate रे लिखुतले. The wooden slate was plastered with dash chalk. Wooden slate was plastered with कौन yellow chalk. Next प्रश्न. The ink pot was dash. Ink pot माने काली दुआत. Ink pot was earthen माने माटी रो काली दुआत. The writer was carrying a dash pen. क्यों पेन नौथले? से reed pen नौथले. Okay, बाउंस काठी बोलिया पेन, बाउंस काठी. The writer's breakfast was thick stale and dash. Thick stale chapati. Okay, मोटा बासी रोटी खाउथले. Grandmother was carrying several stale chapatis with her for the dash, for the dogs, नहीं कि village dogs. ये गाँव रो कुकुर मानक पाए बहुत उड़े बासी रोटी भी नहीं जाउथले. Grandmother always went to school with dash. Went to school with writer. Okay. Next person. The school was attached to the dash. The school was attached to the temple. Who taught alphabets and morning prayer? The priest taught alphabet and morning prayer. पूजक जे थिले मंदिर. The children in the school were singing the alphabet or morning prayer in a dash, in a chorus, माने एका संगरे. Grandmother was sitting inside and reading dash. कौन पढ़ुथले ना scriptures, धर्म ग्रंथ पढ़ुथले. Who were following the writer and grandmother from school and home. School and home रू आसिला बेलू किए निज तांको राइटर एवं ग्रैंडमदर पछे पछे दौड़ी के आसुले विलेज डॉग्स. Who were growling and fighting with each other for chapatis. से विलेज डॉग्स ओके से माने ग्रोलिंग वाँ करथुले फाइटिंग भी करथुले. The writer and the grandmother were sent for when the parents of the writer dash. Sent for what?
okay, sent for comfortably settle in the city. Okay, writer and grandmother were sent for when the parents of the writer जेतेबेले comfortably settled हो गले city रे तापरे writer को grandmother को पठागला कोठी city को आसी गले. Okay, next प्रश्न. What brought turning point in the friendship of the writer and grandmother? कोटा गोटे टर्निंग पॉइंट गोटे चेंज आसला तांकर संपर्क रे मूविंग टू सिटी. नेक्स्ट प्रश्न. द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर शेयर्ड द सेम रूम इन द सिटी. सेम रूम हम. ओके, नेक्स्ट प्रश्न 54. ओके, हु नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ द राइटर इन द सिटी. सिटी रे किए आओ नो लॉन्गर केम टू सिटी. ओके, सिटी रे स्कूल को आसिले नहीं तांको सहित से होचंद ग्रैंडमदर आ आस पारे नहीं बस रे गले ना. द राइटर वेंट टू वन डैश इन द सिटी. वेंट टू ए इंग्लिश स्कूल इन द सिटी. द राइटर वेंट टू द सिटी स्कूल बाय डैश. सिटी स्कूल बाय मोटर बस. द ग्रैंडमदर फेड खोथले डैश इन द कोर्टयार्ड एंड सिटी हाउस. सिटी से नगर सहर हाउस रे घरे रही कि क्या खोले ना स्पैरो मान खोले घर चटिया मान को. एज इयर्स रोल्ड बाय. व्हाट डज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन्स. रोल्ड बाय माने कौन. इयर्स पास्ट बाय वर्ष पर वर्ष गड़ीगला माने पास्ट बाय. रोल्ड बाय. द राइटर वाज टेलिंग हिज ग्रैंडमदर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ डैश. राइटर ग्रैंडमदर को इंग्लिश वर्ड कहते. ओके, आउ कौन कहते ना वेस्टर्न साइंस कथा कहते. नेक्स्ट प्रश्न. द टीचिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस इन द सिटी स्कूल मेड द डैश अनहैप्पी. क्या को अनहैप्पी कला ना ग्रैंडमदर को अनहैप्पी कला माने खुशी हिलानी. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड वेयर थिंग्स ऑफ डैश. वेयर थिंग्स ऑफ कौन. Were things of Western science. Grandmother could not help the writer in his lessons at the city school as she did not understand English and Western science. नहीं कि बुझी पार नथले इंग्लिश तेणु हेल्प करि पार नथले क्या को राइटर को. ग्रैंडमदर वाज डिस्ट्रेस्ड एज देयर वाज. डिस्ट्रेस माने दुखी गले. एज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट डैश इन द सिटी. किछि टीचिंग नथला को ऊपर ना गॉड आओ भगवान आओ धर्मग्रंथ ऊपर कौन सी टीचिंग नथिला. ग्रैंडमदर वाज वेरी डिस्टर्ब्ड व्हेन सी लर्नड अबाउट डैश लेसन्स इन द सिटी स्कूल. को लेसन जेते जानिले जे म्यूजिक पढ़ाउची सेटा भी बहुत दुखी गले. ओके, बहुत चिंतित हो गले. टू द ग्रैंडमदर म्यूजिक हैड डैश एसोसिएशन. ग्रैंडमदर कहले म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. LEWD. व्हाट डज ल्यूड मीन्स. ल्यूड माने होची भलगार माने जोटा भलो नुह खराब. ओके ओके. तापर डैश वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स. माने भिकारी एवं हार्लोट्स. हार्लोट्स माने कौन ए जो नाच करती माने राजा समय नाच करुले. ओके, हार्लोट्स आउ बेस्या बेगर्स. ओके, तांकर कौन ना म्यूजिक वाज द मोनोपोली. तांकरी मोनोपोली होची म्यूजिक. टू द ग्रैंडमदर म्यूजिक वाज नॉट मेंट फॉर डैश. टू द ग्रैंडमदर म्यूजिक वाज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक. जेंटल फोक माने माने साधारण लोकों को पाई नुह. ओके, हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड मीन्स. डिसअप्रूवल माने कौन. Disapproval name and not accepted and approved. Okay, disapproval. Next, when the writer went up to university, the common link of friendship was snapped. What does the underline word mean? Underline word माने broke immediately. Okay, writer एवं ये जो grandmother को friendship पूरा broke है गला. Okay, snapped माने broke भांगी गला. The common link of friendship between the writer and grandmother was snapped because writer went up to university. Writer went up to university. Grandmother accepted her seclusion with resignation. What does the underline word mean? Seclusion माने कौन. Seclusion माने loneliness. एका एका से रहिले grandmother. ओके, तेणु ये 72 क्वेश्चंस मु आलोचना कली. तापरे आउ से भली 70 प्रश्न नेक्स्ट काली मु आलोचना करी. ठीक अच्छी.
बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच वंदे उत्कल जननी समस्ते शेयर करिवो एई भिडियोटी को थैंक यू वेरी मच।